Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों आपको सबको पता है कि in this world there are certain children who do not have parents and we call them orphans. So these children, do you think they don't have any wishes or any ambitions that I want to be this or I want to be that? Everyone has. So ऐसे ही एक बच्चे की हम बात करने वाले हैं in this story called Wonka. Alright, so let's begin with a warm up first. Who are called orphans? Why are they treated cruelly by the society? Orphans कौन होते और उनको सोसाइटी अच्छे तरीके से उनके साथ बर्ताव क्यों नहीं करती? How would you feel if you suddenly find yourself to be an orphan? आपको कैसे लगेगा कि अचानक से God forbid if something goes wrong with your parents and you become an orphan, तो आपको कैसे फील होगा? What are the ideal ways to treat with the orphans? So आपको क्या लगता है कि orphans के साथ उनको कैसे treat करना चाहिए? How should we treat them? We should actually treat them like any other child. Okay, it's just that something unfortunate happened with them and that is the reason why they don't have parents, but otherwise they have God who is their parent and we humans are there to take care of him or her. So we need to take care of the orphans and we need to actually, if we cannot take care of them, अगर हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो least we can do is be kind to them, okay, and not be cruel, not to hurt them. Alright, so let's see this story. What does the synopsis say? Wonka is one of Chekhov's many stories with a child-family separation theme. It shows the latent evil thought or manner in the society. The selfish and greedy nature of human does not even spare an orphan to fulfill their mean purpose. So, we are going to talk about Wonka, which the story called Wonka, which is based on child family separation. Okay, and कैसे लोगों का selfish nature और greedy nature, okay, एक छोटे orphan को भी नहीं छोड़ता है. Okay, so let's begin. 9-year-old Vanka Zukov, who had been apprenticed to the shoemaker Alikhin for 3 months, did not go to bed the night before Christmas. He waited till the master and mistress and the assistants had gone out to an early church service to procure from his employer's cupboard a small phial of ink and a pen holder with a rusty nib. Then, spreading a crumpled sheet of paper in front of him, he began to write. So, 9 साल का वांका था, okay, जो एक shoemaker के साथ उसका trainee, he was learning how to make shoes, so he was working with a shoe trainer, a shoemaker, okay. 9-year-old Vanka Zukov, who had been apprenticed to the shoemaker Alikhin for 3 months, did not go to bed the night before Christmas. अब ये 9 साल का वांका था, okay, जो एक shoemaker थे Alikhin, उनके पास, okay, as a trainee he was working, alright. So he waited for till the master and mistress and the assistants had gone out to the early church सर्विस, तो वो उन शू मेकर के साथ काम करता था. अब उसको क्रिसमस ईव पे, मतलब एक दिन पहले, क्रिसमस के एक दिन पहले शाम को, मतलब ही डिड नॉट गो टू स्लीप, ही वॉज वेटिंग फॉर द मास्टर एंड द मिस्ट्रेस एंड द असिस्टेंट्स टू गो टू द चर्च, ओके. And why was he waiting? He was waiting to procure from his employer's cupboard a small phial of ink and a pen holder with a rusty nib. Then, spreading a crumpled sheet of paper in front of him, he began to write. So, he waited for them to leave so that he could remove a pen holder, some ink, okay, and he wanted to write something, okay, and he couldn't take it if his master was around him, alright. So, that is the reason why he was waiting for them to leave. Before, however, deciding to make the first letter, he looked furtively at the door and at the window, glanced several times at the somber icon, on either side of which stretched shelves full of lasts, and heaved a heart-rending sigh. The sheet of paper was spread on a bench, and he himself was on his knees in front of him.
So, अब ये अपना पहला लेटर लिखने वाला था. ओके, सो वो लिखने के पहले, ओके, ही वाज लाइक स्नीकिंग अराउंड, आई वाज ट्राइंग टू चेक, ओके, इफ एनीबडी इज अराउंड हिम और नॉट, कोई उसको देख तो नहीं रहा है. ओके, सो ही वाज लाइक ट्राइंग टू ग्लांस ऑल अक्रॉस टू सी कि if there is somebody around, okay, if somebody is looking at him, any type of a person or an image who's looking at him is what he was trying to find out. Okay, so on either side of which stretched shelves full of lasts. Okay, so that means that there were lots of tools kept over there, lots of shoemaking items kept over there. So he was he was standing amongst all these things. Okay, and then what he did was he just moved them across. उसने उसको साइड में किया, उसने वो शीट ऑफ पेपर को उस बेंच पे बिछा दिया. ओके, एंड फिर वो अपने नीज पे आया एंड he started writing. अब ये क्या लिख रहा है? So the sheet of paper was spread on a bench and he himself was on his knees in front of it. तो अभी उसने sheet of paper को bench पे बिछा दिया और अपने घुटनों पे उसके सामने बैठ गया. Okay, now he starts writing. Dear grandfather Konstantin Makarich, okay, he wrote, I'm writing you a letter. I wish you a happy Christmas and all God's holy best. I have no mama or papa. You are all I have. तो उसने ये लेटर लिखा है थ्रू ग्रैंडफादर कॉन्स्टेंटिन मैकरिच. इसमें उसने उनको मेरी क्रिसमस विश किया है, उनको क्रिसमस के विशेस दिए हैं. उसने बताया कि यू आर द ओनली पर्सन आई हैव. मेरे पेरेंट्स नहीं है. ओके, आई डोंट हैव माई मॉम, आई डोंट हैव माई डैड, और यू आर द ओनली पर्सन जो मेरे है. ओके. Okay, now Vanka gave a look towards the window in which shone the reflection of his candle and vividly pictured to himself his grandfather Konstantin Makarich, who was night watchman at Messrs to the family called Zivarev. Okay, so Vanka जो है मतलब he was just looking around, तो उसको अपनी कैंडल का रिफ्लेक्शन नज़र आता है. ओके, एंड ही इज़ लाइक ट्राइंग टू सी दैट. ओके, क्लियरली उसको दिख रहा है. अब उसने उस रिफ्लेक्शन में उसने इमेजिन किया उसके ग्रैंडफादर को. ओके, वाज कॉन्स्टेंटिन मैकरिच, और इसको इमेजिन किया दैट ही इज़ अराउंड हिम. अब ये जो उसके ग्रैंडफादर जो थे वो एक नाइट वॉचमैन थे एट मेसर्स. ओके, जो एक फैमिली थी कॉल्ड जिवारेव, उनके पास वो एक नाइट वॉचमैन का काम करते थे. अब नाउ ही इज़ डिस्क्राइबिंग हाउ हिज ग्रैंडफादर लुक्ड. He was a small, lean, unusually lively and active old man of 65, always smiling and blear-eyed. Okay, so ये जो उसके grandfather थे, so this is how he looked. He मतलब height में कम थे. He was lean, दुबले पतले से थे. Okay, and he was very lively. He was very active. Okay, and उनकी age हो गई approximate 65-year-old. Okay, हमेशा smile करते थे. Okay, and he was blear-eyed. मतलब his eyes looked tired because obviously he was a night watchman, but otherwise वो काफ़ी active थे और हमेशा smile करते थे. All day he slept in the servants' kitchen or trifled with the cooks. At night, enveloped in an ample sheepskin coat, he strayed round the domain, tapping with his kajal. Okay, so पूरा दिन वो सोते थे सर्वेंट्स किचन में या फिर ट्रिफल्ड विद द कुक्स, और रात को वो अपना शीप स्किन कोट पहन के ही because he was a night watchman, he had to keep an eye, so he used to walk around the domain. Okay, so domain means the area where he was working. Okay, with his cudgel. Now cudgel is like a club जो होता है ना, it's like a hockey stick कैसे होता है वैसे it is a short heavy club. Okay, so behind him, each hanging its head, walked the old bitch Kashtanka. Okay, and the dog Vyun, so named because of his black coat and long body and his resemblance to a loach. तो उसके पीछे पीछे, okay, each hanging its head, walked the old bitch. Okay, मतलब old bitch is the female dog. Okay, उसका नाम था काष्टंका और एक dog था व्यून करके. So they all used to walk together. Okay, and जो व्यून था, he was a black, he had a black skin. Okay, black coat था उसके ऊपर, black fur. Okay, he had a long body and he looked more like a freshwater fish. Okay,
Now, Vyun was an unusually civil and friendly dog, looking as kindly at a stranger as at his masters, but he was not to be trusted. So ये जो Vyun था वो बहुत अच्छा डॉग था, मतलब ही वॉज वेरी फ्रेंडली टाइप्स ऑफ डॉग. तो जैसे वो अपने मास्टर्स के साथ प्यार से इनको देखता था, वैसे ही वो किसी भी स्ट्रेंजर को भी प्यार से ही उनके साथ देखता था उसको. बट ये ही वॉज नॉट ट्रस्टवर्दी, उसको कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, कभी भी उसका मूड चेंज हो जाएगा, ऐसे वाला डॉग था. ओके, लुकिंग beneath his deference and humbleness was hid the most inquisitorial maliciousness. ओके, तो ये जो उसका लुक था ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड ऑल एंड लुकिंग एट एवरीबडी विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, ओके, उसके पीछे ओके देयर वाज दिस अनदर quality that he had, okay, which was this inquisitorial maliciousness. That means he was quite inquisitive, he wanted to know about things around him, okay, and he had that intention that he can cause harm if he senses a danger. Okay, so no one knew better that he how to than him how to sneak up and take a bite at a leg or slip into the larder or steal a music's chicken. Okay, so उसको पता था, मतलब किसी और को भी इतना आता नहीं होगा, बट उसको आता था कि कैसे स्नीक अप करना है, ओके, कैसे किसी को काटना है, okay, and how to slip into the larder. Okay, larder is a place where you store food, okay, और वहाँ जाके कैसे एक रशियन peasant को, that means जो ये होता है ना चिकन होता है, उसको कैसे अटैक करना है, alright, and steal करना है. More than once they had nearly broken his hind legs, twice he had been hung up, every week he was nearly flogged to death, but he always recovered. So मतलब बिकॉज वो ऐसा था, उसको कितनी बार तो उसको मारा गया है, ओके, उसको हैंग किया गया है, ओके, एक बार तो उसको बहुत ही ज़्यादा पीटा था, बट स्टिल वो कैसे वैसे करके ही रिकवर्स एंड ही गेट्स वेल. ओके, ही वाज विप्ड, ओके, उसको बहुत से पनिशमेंट्स मिले, बट स्टिल ही यूज्ड टू रिकवर. ओके, नाउ एट दिस मोमेंट, for certain, Vanka's grandfather must be standing at the gate, blinking his eyes at the bright red windows of the village church, stamping his feet in their high felt boots and jesting with the people in the yard. His cudgel will be hanging from his belt. He will be hugging himself with cold, giving a little dry old man's cough, and at times pinching a servant girl or a cook. सो ये वांका के ग्रैंडफादर जो थे, अभी रात के समय पे, ओके, मतलब ही इज इमेजिनिंग दैट उसके ग्रैंडफादर अभी गेट पे खड़े होंगे, ओके, मस्ट बी ब्लिंकिंग हिज आईज, ओके, बिकॉज वो जो चर्च से एक ब्राइट रेड लाइट आता है चर्च के विंडो से, उसको देख के उनकी आंखें थोड़ी ब्लिंक हो रही होगी, ओके, एंड देन ही मस्ट बी वॉकिंग, वो अपने पैर स्टैम्प करके चल रहे होंगे, अपने बूट्स पहन के, around the yard with the cudgel hanging, okay, and he must be feeling really cold, तो खुद को ऐसे सिकुड़ के बैठे भी चल भी रहे होंगे, okay, with cold, and बीच बीच में कभी उनको खांसी आ रहे होंगे. So that is how he was describing, imagining his grandfather was, okay, or was at that moment of time. Okay, won't we take some snuff, he asks, holding out his snuff box to the women. Okay, the women take a pinch of snuff and sneeze. Okay, so snuff is like, a tobacco type of thing, okay, jo people take, all right, so it's like, finely chopped tobacco jo naak se log inhale karte hain. So to wo because he is around the servant girl or cook, तो वो उनको पूछते हैं कि क्या हम snuff ले, and then snuff लेते ही those women, the moment they took that snuff, तो नाक से छींक निकल आई. The old man goes into indescribable ecstasies, okay, breaks into loud laughter and cries, "Off with it, it will freeze to your nose." So, he makes fun of them sneezing, and, he feels very happy to see the way they sneeze and all. So, he gives his snuff to the dogs too. अब ये snuff जो है, ये tobacco का जो फाइन पाउडर जो है, वो अपने डॉग्स को भी देता है, ओके, तो कष्टांका जो है वो भी स्नीज करती है. शी ऑल्सो ट्विचेस हर नोज एंड वॉक्स अवे ऑफेंडेड. Vyun deferentially
refuses to sniff and wags his tail. Okay, but Kashtanka to she sneezes. Okay, but Vyun doesn't take it that. Okay, it is a glorious weather, not a breath of wind, clear and frosty. It is a dark 8, but the whole village, its white roofs and streaks of smoke from the chimneys, the trees silvered with hoar frost, and the snow drifts. You can see it all. So, ye because the story is based in Russia, okay, and it's very cold in Russia. So, and it's December, it's winter time, so obviously there is a lot of snowfall there. So, this entire place around the grandfather, okay, the weather is fine, there is no wind, okay, so it's not windy, but there's snow all around, the air is clear, there's snow around, so you can see, everyone over there, they have the उनके घर में वो फायर प्लेस होती है, सो वो फायर प्लेस से चिमनी से वो धुआं बाहर आ रहा है, ओके, एंड ट्रीज पे भी देयर इज फ्रॉस्ट, ओके, all over, there's snow all over, okay, there's snow drifts. The sky scintillates with bright twinkling stars, and the Milky Way stands out so clearly that it looks as if it had been polished and rubbed over with snow for the holidays. So the weather is so clear, sky is so clear कि twinkling stars भी नज़र आते हैं, Milky Way भी नज़र आती है. तो ऐसे लगता है जैसे कि ये Milky Way को किसी ने घिस के पॉलिश करके साफ करके आकाश में बिछा के रखा है. Okay, Vanka sighs, dips his pen in the ink and continues to write. अब Vanka जो है is imagining all these things. अब इसके बाद वो he takes a deep breath and फिर वो अपना लिखना continue करता है. So इसमें लिखता है, Last night I got a thrashing. My master dragged me by my hair into the yard and belabored me with a shoemaker's stirrup. Because while I was rocking his brat in its cradle, I unfortunately fell asleep. Okay, so वो कह रहा है, उसके ग्रैंडफादर को बता रहा है कि कल रात को मेरे जो मास्टर है उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की. ओके, उन्होंने मुझे मेरे बाल खींच के वो मुझे यार्ड में लेके गए. ओके, एंड ही एक्चुअली beat me so much with a shoemaker's stirrup, okay, because और इसका रीज़न था क्योंकि उनका जो ब्रैट था, उनका जो बच्चा था वो क्रेडल में, I was rocking that cradle, okay, उसका जो पालना था उसको मैं झूला रहा था और उसके बाद मेरी आँख लग गई और मैं सो गया. एंड उसके साथ साथ now he continues saying that and during the week, okay, now he goes ahead. तो पहली कंप्लेन तो हो गई. अब next he says that during the week my mistress told me to clean a herring and I began by its tail, so she took the herring and stuck its snout into my face. तो कहता है कि इस हफ्ते में मेरी मिस्ट्रेस ने जो है मुझे उन्होंने हेरिंग को क्लीन करने को बोला. हेरिंग इज अ फिश, ओके, तो उस फिश को क्लीन करने के लिए बोला. तो मैंने उसको I began to clean from the tail. So tail से मैं साफ करने लगा. तो उस मिस्ट्रेस ने क्या किया, तो उसने उस हेरिंग को उठाया और she stuck its snout, उसका जो स्नाउट होता है वो उसने मेरे फेस में डाल दिया. Okay, the assistants tease me, send me the tavern for vodka, okay, make me steal the master's cucumbers and the master beats me up with whatever is handy. So ना केवल मास्टर एंड मिस्ट्रेस, इवन द असिस्टेंट्स जो है वो इसको इल ट्रीट करते, इससे काम करवाते, उससे वॉडका मंगवाते, उससे मास्टर के चेम्बर से जाके खीरा या चोरी करने के लिए कहते. तो ये इस सब की वजह से उसको मास्टर से बहुत मार पड़ती है. ओके, उसके मास्टर जो है उसकी बहुत पिटाई करते. फूड देयर इज़ नन. इन द मॉर्निंग इट्स ब्रेड, एट डिनर ग्रुअल एंड इन द इवनिंग ब्रेड अगेन. सो कहता है कि खाना तो मिलता ही नहीं है, मुझे बहुत कम खाना मिलता है. मॉर्निंग में मुझे ब्रेड मिलता है, ओके, इवनिंग में मुझे एक पॉरेज मिलता है जो बहुत, इवनिंग में डिनर के लिए मुझे पॉरेज मिलता है जो बहुत ही मतलब इट इज़ लाइक वेरी वाटरी, ओके, एंड अगेन इन द इवनिंग आई गेट ब्रेड. As for tea or sour cabbage soup, the master and the mistress themselves guzzle that. So
चाय और सूप की बात करी जाए तो वो तो सिर्फ मेरे मास्टर और मिस्ट्रेस ही जल्दी जल्दी पी लेते हैं, हम मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है. दे मेक मी स्लीप इन द वेस्टिब्यूल एंड व्हेन देयर ब्रैट क्राइज आई डोंट स्लीप एट ऑल बट हैव टू रॉक द क्रेडल. तो कहता है मुझे जो है, मुझे ऐसे लॉबी में या पैसेज में सोने के लिए कहते हैं, और जब भी उनका बच्चा जो है वो रोने लगता है तो मुझे तो सोने को मिलता ही नहीं है. एंड आई हैव टू सिट अप फुल नाइट cradling the baby. Okay, so dear grandpapa, for heaven's sake, take me away from here, home to our village. I can't bear this anymore. So अब वो अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता हूँ. आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई विलेज. आई कांट टेक दिस एनी मोर. सो उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा था बिकॉज यू नो ही वॉज एन ऑर्फन. Now he is really totally fed up and he can't take it anymore. I bow to the ground to you and will pray to God forever and ever. Take me from here or I shall die. So अब वो उसको इतनी तकलीफ हो रही है कि वो कह रहा है, उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आई एम प्रेइंग टू यू, आई विल प्रे टू गॉड. ओके, जल्दी से जल्दी मुझे आप यहाँ से ले जाओ. आई कैन, और यहाँ नहीं तो आई विल डाई. The corners of Vanka's mouth went down. He rubbed his eyes with his dirty fist and sobbed. Okay, now he's so emotionally hurt. Okay, he's so disturbed. Automatically, as he wrote all these words, he starts crying. Okay, his hands are dirty. His, you know, whatever the way he is, he's not kept clean. Also, I'll grate your tobacco for you. अब वो कहता है कि मैं आपके लिए आपका जो टोबैको है उसको भी ग्रेट करूँगा. ही कंटिन्यूड, आई प्रे टू गॉड फॉर यू एंड इफ देर इज़ एनीथिंग रॉन्ग देन फ्लॉग मी लाइक द ग्रे गोट. एंड इफ यू रियली थिंक आई शांट फाइंड वर्क देन आई आस्क द मैनेजर फॉर क्राइस्ट सेक टू लेट मी क्लीन द बूट्स और आई विल गो इंस्टेड ऑफ फेटका एज अ शेपर्ड बॉय. सो अब वो कह रहा है कि मैं गॉड से प्रे करूँगा आपके लिए. ओके, फॉर योर गुड हेल्थ और फॉर यू. ओके, और अगर कोई गलती होती है तो आप मुझे मार सकते हो. ओके, आप मुझे, अगर मुझे काम नहीं मिलता है तो मैं मैनेजर से बात करके ओके आई कैन क्लीन हिज बूट्स और मैं शेपर्ड बॉय बन के आई कैन टेक द शीप फॉर ग्रेजिंग ऑल्सो. सो डियर ग्रैंड पापा, आई कांट बेयर दिस एनी मोर. इट विल किल मी. I wanted to run away to our village, but I have no boots, and I was afraid of the frost. And when I grow up, I'll look after you. No one shall harm you. And when you die, I'll pray for the repose of your soul, just like I do for Mama. So अब वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मैं अब बेयर नहीं कर सकता. मैंने कोशिश की थी यहाँ से भागने की, पर मेरे पास बूट्स भी नहीं है और मुझे ये जो फ्रॉस्ट है, ये जो विंटर है, कोल्ड है, बर्फ़ है आसपास सब जगह पे, मुझे उससे डर लगता है. ओके, और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो नाउ ही प्रोमिसेस हिज ग्रैंडफादर दैट जब मैं बड़ा हो जाऊँगा आई विल लुक आफ्टर यू, मैं आपकी पूरी तरह से देखभाल करूँगा. ओके, एंड मैं जब आप when you will die, okay, मैं प्रे करूँगा कि आपको, आपकी आत्मा को भी शांति मिले कि जैसे मैं अपनी मम्मा के लिए प्रे करता हूँ. As for Moscow, it is a large town. There are all gentlemen's houses, lots of horses, no sheep, and the dogs are not vicious. Okay, the children don't come around at Christmas with a star. No one is allowed to sing in the choir. And once I saw in a shop window hooks on a line and fishing rods, all for sale. And for every kind of fish, awfully convenient. So अब वो कह रहे as for Moscow, मॉस्को जो जगह है वो बहुत बड़ा टाउन है. ओके, बहुत सारे जेंटलमैन के घर है वहाँ पे. ओके, बहुत सारे हॉर्सेस है वहाँ पे, शीप नहीं है वहाँ पे. डॉग्स जो है वो इतने दे आर नॉट सो विशियस, दे आर नॉट सो क्रूअल, इतने डरावने नहीं है वो. ओके, द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो ऐसे क्रिसमस पे बाहर नहीं आते विद अ स्टार. ओके, किसी को भी अलाउड नहीं होता है टू क्वायर में गाने के लिए. ओके, और मैंने एक बार शॉप विंडो से देखा था कि वहाँ पे अलग अलग हुक्स लगे हुए हैं फॉर द फिशिंग. ओके, हुक्स एंड फिशिंग रॉड्स लगे हुए सब सेल के लिए, एंड वो अलग अलग टाइप के फिश के हिसाब से रॉड्स रखे गए. एंड देयर वाज वन हुक विच वुड कैच अ शीट फिश, ओके, वेइंग अ पाउंड.
and there are shops with guns like the master's, and I'm sure they must cost 100 rubles each. And in the meat shop there are woodcocks, partridges and hares, but who shot them or where they come from, the man shop won't say. तो अब वो ही इज़ टॉकिंग अबाउट मॉस्को. मॉस्को में जो अलग अलग शॉप्स है, वहाँ पे जो अलग अलग आइटम्स मिलते हैं, जैसे गन्स हो गए, फिशिंग हुक्स हो गए, फिर उनके कॉस्ट के बारे में वो बात कर रहा है. ओके, मीट शॉप्स के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे अलग अलग तरीके का मीट रखा गया है, ऑफ वुडकॉक्स, पार्ट्रिजेस, हेयर. ओके, सो कहते हैं कि इनको सबको रखा तो गया है बेचने के लिए, बट उन्हें मारा किसने उसके बारे में तो किसी को नहीं पता और शॉपमैन भी नहीं बताएगा. Dear grandpapa, and when the masters give a Christmas tree, take a golden walnut and hide it in my green box. Now he continues writing further saying, Dear grandpapa, and when the masters give a Christmas tree, take a golden walnut and hide it in my green box. तो कहता है कि जब आपके मास्टर जो है क्रिसमस ट्री देंगे तो उसमें से गोल्डन वॉलनट ले लेना और मेरे ग्रीन बॉक्स में छुपा देना. So now he further says that, ask the young lady Olga Ignatievna for it, say it's for Vanka. तो कहता है आप ना वो जो यंग लेडी है ना उससे पूछना, ओल्गा करके जो है वो दे देगी आपको, बोलना कि ये वांका के लिए. Vanka sighed convulsively and again stared at the window. He remembered that his grandfather always went to the forest for the Christmas tree and took his grandson with him. So अब जो है वांका दोबारा से खिड़की के बाहर झांक के देखता है. Okay, now he's just thinking, he's always in the thoughts. Okay, now he's like really, he sighs very violently, he's like really upset कि, और वो बाहर देखता है. उसको याद है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो फॉरेस्ट में जाते थे क्रिसमस ट्री लाने के लिए. ओके, और उसको साथ में ले जाते थे. व्हाट हैप्पी टाइम्स वर दोस. ओके, अब उसको पुराने दिन याद आते हैं कि कितने हैप्पी टाइम्स थे. द फ्रॉस्ट क्रैकल्ड, हिज ग्रैंडफादर क्रैकल्ड, एंड एज दे बोथ डिड, वांका डिड द सेम. देन बिफोर कटिंग डाउन द क्रिसमस ट्री, his grandfather smoked his pipe, took a long pinch of snuff, and made fun of poor frozen little Vanka. So अब उसको पुरानी यादें आ रही कि कैसे वो लोग उस बर्फ़ में क्रिसमस ट्री लाने जाते थे, कैसे उसके ग्रैंडफादर ट्री कट करने से पहले ही टू स्मोक पाइप और स्नफ लेते थे, और कैसे उसका मजाक उड़ाते थे बिकॉज ऑफ द ही वॉज लिटरली फ्रोजन ओवर देयर. सो उसका कैसे मजाक उड़ाते थे. The young fir trees, wrapped in a hoar frost, okay, stood motionless, waiting for which of them would die. Suddenly, a hare springing from somewhere would dart over the snowdrift. His grandfather could not help shouting. So, अब ये जो young fir trees थे जिसको कट करते क्रिसमस के वक्त, ओके, वो वहाँ पे पूरे फ्रॉस्ट से कवर्ड है. ओके, दे आर स्टैंडिंग देयर मोशनलेस एंड दे वेट करे कि कब कोई आके हमें मार देगा. ओके, सडनली वहाँ से एक हेयर आता है, मतलब द रैबिट. ओके, कम स्प्रिंगिंग आउट ऑफ नोवेयर. ओके, तो उसके ग्रैंडफादर जो है वो चिल्लाते थे. ओके, कैच इट, कैच इट, कैच इट, शॉर्ट टेल डेविल. सो यू नो दिस ग्रैंडफादर यूज्ड टू लिटरली आस्क देम टू गो एंड कैच इट. उसको पकड़ने के लिए कहते थे सबको. When the tree was down, his grandfather dragged it to the master's house and there they set about decorating it. उसके बाद जब ट्री कट होता था तो वो मास्टर के घर पे लेके जाते थे, उसको डेकोरेट करने के लिए सेट करते थे उनके घर में. The young lady, Olga Ignatievna, Vanka's great friend, busied herself most about it. When little Vanka's mother, Pelagie, was still alive and was servant woman in the house, Olga Ignatievna used to stuff him with sugar candy and have nothing to do, taught him to read, write, count up to 100 and even dance to the quadrille. Okay, so अब ये जो young lady थी ओल्गा, okay, वो वांका की friend थी. She was a great friend of Vanka. Okay, वो she was like busied herself most about it. When little Vanka, जब जो वांका छोटा था और उसकी मम्मी जिंदा थी, ओके, हिज मदर्स नेम वाज पेलाग्वेवा. ओके, जब वो पेलागेवा जब जिंदा थी, ओके, और सर्वेंट वुमन का काम करती थी घर में, तो ओल्गा जो है वो वांका को शुगर कैंडीज देती थी. ओके, वो उसको पढ़ना सिखाती थी, उसको लिखना सिखाती थी, उसको काउंटिंग सिखाया था अप टू 100. ओके, और उसको डांस करना भी सिखाया था. ओके, टू द क्वाड्रिल. ओके, ना क्वाड्रिल इज अ डांस वे जो 4 कपल्स डांस करते हैं वैसे वाला.
When Pelagea died, okay, they placed the orphan Vanka in the kitchen with his grandfather, and from the kitchen he was sent to Moscow to Alekhin, who was the shoemaker. So Pelagea जब when she died, okay, उसके बाद वांका को किचन में अपने ग्रैंडफादर के साथ रखा गया था to do the work, और फिर उसके बाद उसको मॉस्को भेजा गया, where now he is working with Alekhin, who's the shoemaker. Come quick, dear grandpapa, continued Vanka. I beseech you, for Christ's sake, take me from here. Have pity on a poor orphan, for here they beat me, and I'm frightfully hungry and so sad that I can't tell you. I cry all the time. So अब वो वापस से ओके दोबारा से अपने लेटर में लिख रहे हैं कि ग्रैंडपा प्लीज़ कैसे भी करके आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे कुछ खाने नहीं देते, बहुत मुझे मारते रहते हैं, ओके, एंड मैं हमेशा सिर्फ रोता ही रहता हूँ. The other day the master hit me on the head with a last, okay, I fell to the ground and only just returned to life. My life is a misfortune, worse than any dog's. I send greetings to Eliona, to one-eyed Yogorka, and the coachman, and don't let anyone have my mouth organ. I remain your grandson, Ivan Zukov. Dear grandpapa, do come. So अब वो उसको बोला कि my master also hit me on the head. मुझे सर पे भी उन्होंने बहुत मारा, okay? मैं ज़मीन पे गिर गया था, and I was literally unconscious. My life has become a misfortune, okay, and it is worse than any dog's life also. So मैं उसके बावजूद भी I'm like sending greetings, my best wishes to Aliona, okay, to one-eyed Yogorka and the coachman also. Grandpa कुछ भी करके please आके मुझे यहाँ से ले जाओ. So Vanka folded his sheet of paper in four, put it in an envelope, purchased the night before for a kopeck. He thought a little, dipped the pen into the ink and wrote the address. अब वांका ने उस पेपर को फोल्ड किया, ओके, एनवेलोप में डाल दिया जो उसने कॉपेक के ले लाया था. इट इज़ लाइक अ करेंसी ऑफ रशिया. एंड देन फिर सोच के पेन को इंक में डिप करके उसने एड्रेस लिखा, द विलेज टू माई ग्रैंडफादर. ही देन स्क्रैच्ड हिज हेड, थॉट अगेन एंड एडेड, Konstantin Makarich. Pleased at not having been interfered with his writing, he put on his cap and without putting on his sheepskin coat, ran out in his shirt sleeves into the street. Okay? अब उसके पास एड्रेस ऐसा प्रॉपर एड्रेस नहीं था, तो उसने एनवेलोप पे क्या लिखा, द विलेज टू माई ग्रैंडफादर. ओके, फिर उसने सोचा और उस पर उनका नाम डाल दिया, कॉन्स्टेंटिन मैकरिच. ओके, अब किसी बारे में बिना सोचे समझे अपना कोड भी नहीं पहना, एंड देन ही जस्ट रैन आउट इन द स्ट्रीट. ओके, द शॉपमैन एट द बुचर्स फ्रॉम whom he had inquired the night before had told him that letters were to be put into post boxes. Okay, अब उसने बुचर्स के यहाँ पे जो शॉपमैन था उससे पूछा था, तो उन्होंने बताया था इसको कि लेटर्स जो है उनको पोस्ट बॉक्स में डालते हैं. Okay, and from there they were conveyed over the whole earth in mail cart by drunken post boys or to the sound of bells. तो उसके फिर वहाँ से ये जो लेटर्स हैं वो अलग अलग जगहों पे पहुँचाए जाते हैं, ओके, बाय द ड्रंकन पोस्ट बॉयज, मतलब पोस्ट बॉयज जो पिए हुए हैं, एंड टू द साउंड ऑफ द बेल्स. Vanka ran to the first post box and slipped his precious letter into the slit. Okay, अब वांका दौड़ के जाता है और वो पोस्ट बॉक्स में डाल देता है. An hour afterwards, lulled by hopes, he was sleeping soundly. In his dreams, he saw a stove. By the stove, his grandfather sitting with his legs dangling down, barefooted, and reading a letter to the cooks, and Vian walking around the stove wagging his tail. उसके बाद वो घर जाता है, एंड देन नाउ ही इज स्लीपिंग, एंड इन स्लीप वो अपने उसको सपना आता है कि उसके ग्रैंडफादर को जो वो लेटर है वो मिल गया है, वो बैठे हैं, ओके, वो पढ़ रहे, ओके, लेटर कुक्स के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं. व्यून जो है वो वहाँ पे अपने टेल वैग करके चल रहा है. सो दिस इज द लेटर वेयर दिस पोअर लिटिल बॉय हु इज एन ऑर्फन, जो अपने इकलौते रिलेटिव जो बचे हैं उनको लेटर लिखता है और उनको बताता है कि उसको कितने मिजरीज का सामना करना पड़ रहा है. ओके, ही डज नॉट हैव द एड्रेस बट ही इज
still being hopeful कि someone will help. So children, this just tells us that yes, there are people who are very cruel to the orphans. लोग orphans को अच्छी नज़र से नहीं देखते. Okay, they treat them very badly, which is very wrong. Okay, they are also helpless. तो orphan जो होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, वो helpless होते हैं. उनके पास कोई जाने का ठिकाना नहीं होता है. So उनको ऐसे लगता है कि कोई तो उनको देखे, कोई तो उनसे प्यार से बिहेव करे, उनको खाना पीना दे दे, उनको एजुकेशन दे दे. So this is the story of this poor little boy, Vanka. All right, now this beautiful story was written by Anton Chekhov. Okay, Anton Pavlovich Chekhov was born on 29 January 1860 in Russian Empire. Anton Pavlovich Chekhov was a Russian writer. He is often considered as a pioneer of modernism in theatre. He was also one of the architects of modern short story. His famous works include Uncle Vanya, Three Sisters, The Cherry Orchard and The Seagull. He died on 15 July 1904 in Germany. So, this writer was very good Russian writer, okay, और उनको modernism, he was considered as a pioneer in modernism in the theatre. तो उन्होंने काफ़ी सारे dramas भी लिखे हैं and he was an architect of modern short stories. So काफ़ी सारे short stories भी उन्होंने लिखे. Okay, his famous works were Uncle Vanya, Three Sisters, The Cherry Orchard and The Seagull. Alright, now let's look at the new words that we've come across in this chapter. Apprentice. Apprentice is a trainee, especially in a skilled trade. Procure means to obtain. Furtively means stealthily or sneaking. Somber means grave or serious. Icon is image or picture. Lasts. Last are tools, okay? They are tools for shaping or preserving the shape of the shoes. Shoes को का shape maintain करने के लिए lasts use करते, okay? That's like a tool. Vividly means clearly or in a detailed manner. Blear-eyed means eyes that look tired. Domain is a field or sphere of activity. Cudgel is a short, heavy club. Resemblance of similar kind. Okay, loach is freshwater fish. Deference is great respect. Inquisitorial, in a manner of inquisition, मतलब inquisit होना. Okay, जानने के लिए काफ़ी excitement रहना या want to know more. Okay. Maliciousness means intention to do harm, किसी को चोट पहुंचाने का intention. Sneak up is to approach a person or animal without being seen. Okay, तो चुपके से दबे पाव जाना. Larder is a room for storing food. Music is a Russian peasant. Flogged. Flogged means to whip. Okay, मारना, चाबुक से मारना या inflict pain as punishment. Okay. Snuff is the finely chopped tobacco. Ecstasies means extremely happy. Okay. Streaks of smoke, the continuous lines of smoke. Hoarfrost. Hoarfrost is greyish white color of frost. Scintillates are shines or sparkles, and belabored matlab to beat soundly. Herring is a type of small oily fish. Gruel is thin watery porridge. Guzzle is to eat or drink, jaldi jaldi khana ya peena, eat or drink quickly. Okay. Vestibule is a lobby या फिर एक passage होता है between the interior of a building, okay, and the outer door. Okay. Vicious मतलब cruel या destructive. Convulsively means violently. Quadrille is a dance with 4 couples forming square. And besiege is request. Alright. Now, orphan characters are extremely common as literary protagonists, especially in children's and fantasy literature. The lack of parents leaves the characters to pursue more interesting and adventurous lives, deprived of love and tortured by the society for their unscrupulous lust. There are several stories based on orphans such as Jane Eyre, Oliver Twist, Tom Sawyer and Harry Potter. Okay, so ये जो orphan characters होते हैं ना, ये बहुत से stories में literary protagonists के में इस
इनके बेसिस पे, ऑर्फन कैरेक्टर्स के बेसिस पे काफ़ी सारी स्टोरीज लिखी गई है. ओके, एंड it shows that the lack of parents, okay, because of that, how the characters are pursuing more interesting and adventurous life. Some of the examples are of Oliver Twist, Tom Sawyer, Harry Potter, Jane Eyre. Okay, so these are certain examples of these famous characters who are orphans. Okay, and kaise how they make their life more interesting, adventurous. Okay, they, although they are deprived of love, उनको कोई प्यार नहीं करता है, उनको torture करता है, उसके बावजूद, okay, how they are trying to live in the society. Okay, now children, quickly read this chapter because you need to do the back exercises. There's question time in which you have to do the reference to context. Choose the correct answer, answer the following questions, think and answer. Alright, now let's move on to the grammar study. Direct and indirect speech, interrogative sentences. The interrogative form of the direct speech will change to assertive sentence in the indirect speech. Okay, the girl said to him, "How are you?" So indirect speech में इसको क्या होगा? The girl asked him how he was. Okay, तो interrogative form जो होता है direct speech का, okay, will change to assertive sentence. तो interrogative मतलब question sentence, अब ये change हो जाएगा into assertive, okay, sentence in indirect speech में. Okay, so जैसे interrogative में direct speech में हम the sentence is like the girl said to him, comma, double inverted, how are you, question mark. तो इसको indirect कैसे लिखेंगे? The girl asked him how he was. Clear? In place of said or said to in the direct speech, asked or inquired will be used in the indirect speech. तो अगर हम डायरेक्ट स्पीच में said या said to यूज करते तो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा asked या inquired. The teacher said, who invented telephone? So indirect will be the teacher inquired who had invented telephone. The interrogative sentences which begin with WH words like what, which, when, where, why, who and how take these WH words as conjunctions in the indirect speech. So Sheila said Mohit, why are you so upset today? So इसका हो जाएगा Sheila asked Mohit why he was so upset that day. Okay. The interrogative sentences which begin with auxiliary verbs take if or whether as conjunctions in the indirect speech. Ravi said to her, do you like to have ice cream with me? Ravi asked her if she liked to have ice cream with him. Okay. Now change the following direct speech to indirect speech. Wouldn't you like to look 10 years younger? Said my hairdresser. Okay. My hairdresser asked me if I would like to look 10 years younger. Okay. The man said to the girl, shall I bring you some snacks? So it is like, the man asked the girl if she would like to have some snacks. Alright. So likewise do the rest of them. Now change the following indirect speech to direct speech. Ronak asked Mohit if he was going to school that day. So Ronak said to Mohit, okay, or you can say Ronak said to him, will you go to school today? Okay, or are you going to school today? The stranger asked a girl if she would not help him. So यहाँ पे the stranger said, would you help me please? Okay. So likewise do the rest of them. Now let's move on to word study. Form other words with the given words, follow the instructions and one is done for you. Alright. So from other words you have to make a new word. Okay. Change cruelty into a word for knives, forks and spoon. So cruelty को आपको unscramble करना है तो आपको मिलेगा cutlery. Okay. And cutlery is the word that we use for knives, forks and spoons. Alright. Change disease into a popular place to go on holiday. Okay. So it will be seaside. Okay. SEASIDE. तो disease को हमने unscramble कर दिया है. Alright. And we've got the new word which is seaside where people go for holiday. तो अब आपको ऐसे ही आगे वाले
वर्ड्स को करना है. ओके, जैसे चेंज टीचर टू अ नोबल जॉब. सो टीचर को जब आप चीटर को चेंज करते हो, ओके, तो आपको नोबेल जॉब क्या मिलता है? टीचर. ओके, चीटर टीचर. ऑलराइट, सो ऐसे आप दूसरे वर्ड्स को चेंज करना है. ऑलराइट, नाउ rewrite the sentences writing the compound words for the underlined words. You may make changes wherever required. One is done for you. The men took shelter in a house which was built on the farm that had been bombed out. So, a house which was built on the farm क्या बन जाएगा? Farmhouse. Okay. The men took shelter in the farmhouse that had been bombed out. Okay. The soup in the pan for making sauce was boiling rapidly. तो the pan for making sauce क्या बनेगा? Saucepan. Okay. So the soup in the saucepan was boiling rapidly. Clear? तो ऐसे आपको बाकी sentences को change करना है. Okay. Listening time. Listen to the poem and understand it carefully. Fill in the blanks. Okay. Speaking time में individual students will speak about their one strength and one weakness. Okay, कौन सी ऐसी strength है कि I can do this very well and whatever, and what is that one weakness. Okay, and you may also form groups, okay, to discuss. Now writing time, you have to do a summary writing. Okay, what you will do is you will read this passage very carefully और इसकी तुम्हें summary लिखनी है, मतलब इसको आपको shorten करना है. ओके, वॉट यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दैट पैसेज उसको आपको शॉर्ट में लिखना है. ओके, तो अगर ये पैसेज इतना बड़ा है उसको आपको 100 वर्ड्स में आपको इस पैसेज से क्या समझ में आता है वो लिखना है. ओके, नाउ द पैसेज इज द गवर्नर ऑफ द प्रिजन हैड अ फाइनल टॉक विद द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम इन द प्रिजन. The secretary asked basic questions about the candidate and the place of examination. He was informed by the governor that there was a prisoner, James Roderick Evans, better known as Evans the Break, who was charged with the accusation of theft and breaking the jail thrice, and who was a great imitator. This time he was shifted to H.M. prison, Oxford, which seemed to be pretty tough for him to break through as the prison had high walls and the officers were quite vigilant. Evans desired to learn the O-level German and started learning it last September. Evans would sit for the exam in his own cell. To conduct the exam, a parson from St. Mary Mag's would be appointed as an invigilator. On June 7 at 8:30 p.m. in the heavily guarded recreational block, Evans shook hands with his German teacher, who commented him that he had not a chance to pass the O-level German examination the next day. He met with 2 visitors on the day of his examination. His cell on the D wing was guarded by Jackson, the senior prison officer, and Stephens, who was recently recruited to the profession. Jackson and Evans had become warm enemies. Jackson taunted him, calling him Little Einstein, whereas Evans replied him even mockingly. Evans had the unshaven face, which he was about to shave, and wore a filthy-looking red and white bobble hat. Jackson asked Stephens to take the razor which Evans after the shaving. Jackson even confiscated Evans' nail scissor and nail file on the command of the governor. Evans, knowing the goodness in Jackson, requested him to return the nail scissor as it was a lucky charm for him. Jackson offered him the nail scissor and did not ask him to remove his hat because he did not like the long wavy hair of Evans. तो ये जो पैरा है, it is based on a prisoner, okay, जिसको एग्ज़ाम देनी होती है of German, okay, O-level German examination देनी होती है और उसके लिए there is a permission which is got from the governor, okay, कि कैसे वो एग्ज़ाम दे सकता है. अब ये जो है वो एक खतरनाक कैदी होता है जो who's managed to run away from different jails, okay, but अब वो जिस जेल में है it is very difficult for him to escape from there. So कैसे उसके एग्ज़ाम देने के लिए, okay, कैसी तैयारी की जा रही है और वो खुद कैसे लग रहा है, कैसे खुद को प्रिपेयर कर रहा है, वो सब
That's the passage which is based on. So whatever you found or whatever you've understood of it, उसका एक 100 words में आपको summary लिखना है. Alright, but before you write this summary, you need to reread the chapter completely. उसके बाद you have to complete all the back exercises. फिर आपको grammar करना है, grammar के exercises भी finish करने हैं, and then you can get on to the other activities. Alright children, get going.